everyone, this is Ankit Kumar and I'm here once again with another video of class 12th. This video of class 12th is on poetry. Poetry name is Keeping Quiet, composed by Pablo Naruda. Pablo Naruda ने इस पोएट्री को कंपोज किया है जस्ट टू कन्वे अ मैसेज, एक मैसेज कन्वे करने के लिए हम तक टुवर्ड्स ह्यूमन, हमारी तरफ एक इशारा किया है टू थिंक अबाउट इट, टू थिंक अबाउट आवर डीड्स, हमारी डीड्स के बारे में सोचने के लिए, हमारी चीजों के बारे में सोचने के लिए कि हम जो भी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डीड्स। हम जो काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे अगर हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। सो माइट पॉसिबल इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं जस्ट टू थिंक ओवर इट, जस्ट टू थिंक अबाउट इट, सो फ्रॉम वेयर वी विल गेट, हम टाइम अगर निकालना भी चाहें तो हमारे उस बिजी शेड्यूल में से उस टाइम को कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक बहुत ही बेसिक सा रिक्वेस्ट किया कि सब कुछ रोक दो फिलहाल, जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट टेक अ पॉज, इट्स नॉट अबाउट स्टॉप। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड पॉज। ओके, तो हम इस चीज को पहले क्लियर कर लेते हैं कि वो स्टॉप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड वन बाय वन हम लाइन टू लाइन चीजों को देखते जाएंगे और क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं हम इस पोएट्री में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री फर्स्ट एंड देन इन बिटवीन द पोएट्री वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड पॉज। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। The very first line is, now we will count to 12. He is requesting to us that we will count to 12. It's a random number, just to take a pause. We will count to 12 and we will all keep still. और उस दौरान हम क्या करेंगे? We will all keep still means zero inactivity. Still means zero inactivity. For once on the face of earth, let's not speak in any language. For what purpose we are doing? For what is the reason behind taking a pause? For the earth, right? For once on the face of earth, let's not speak in any language. किसी भी लैंग्वेज में हमें बात नहीं करनी है। रीजन देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, by using this term he is emphasizing on a particular phenomena that we are divided on many bases, on many factors like birthplace, language known, gender, color, caste, creed and many more things. And that is why he is requesting us that let's not speak in any language. हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है। Means there would be no movement at all, there would be no conversation, no transfer of any kind of message. Let's stop for 1 second. कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के लिए, बस एक मूवमेंट के लिए ही सही, but let's stop for 1 second and not move our arms so much. It's not about arms, it's about physical movement. So there should not be any physical movement at all. Let's move towards the second one, the second stanza. It would be an exotic movement. Of course, it would be an exotic movement because there would be no movement at all. Without rush, without engine. There would be no rush and no engines. Means no machinery, no mechanism were functioning at that time. We would all be together. उस टाइम में हम सब साथ होंगे, ऑफ कोर्स साथ होंगे कि एक काम होगा, एक ऐसा काम होगा जिसमें हम सब साथ होंगे। We would all be together. हम सब ये काम साथ कर रहे होंगे। वैसे जनरली we are not doing things together, right? There is a lack of togetherness. Of course, in a sudden strangeness, two words are there, that sudden and the strangeness. So it would be suddenly and strangeness, that would be a strange moment as well. वो एक strange moment होगा and now from here, यहां से वो कुछ examples ले रहे हैं and with the help of these example he is trying to convey message to different communities, different section of society. सोसाइटी के अलग अलग sections को वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं by taking such examples. यहां पर 2 examples हैं, let's discuss about it. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fisherman is representing humans, not only fisherman community. It's about all humans who are using natural resources, of course for their personal use, but not thinking about it. 1 सेकेंड के लिए भी उनके माइंड में थॉट नहीं आता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेस को किस तरह से यूज कर रहे हैं और वो नेचर को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स।
Whales are representative of nature, and fishermen is representative of humans. So fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Man gathering salt. This man means these people who are gathering salt. ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग जो एक सेकंड के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो बस लगातार काम किए जा रहे हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ सफरिंग दे आर फेसिंग, किस तरह के सफरिंग को वो फेस कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं. दे डोंट हैव टाइम टू एनालाइज दिस, राइट? सो दे वुड गेट टाइम टू लुक एट हिज हर्ट हैंड. तो जो इंसान सॉल्ट गैदर कर रहा है, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखने का टाइम मिल पाएगा उसे. सिमिलरली उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो लगातार बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं, बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट और उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी पेन को फेस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग टाइम टू थिंक ओवर इट, थिंक अबाउट इट. सो दे विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट इट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट पैरास हम डिस्कस करते हैं, और वहां पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Okay, so let's discuss about the next stanza, the third, fourth and the fifth stanza. Okay, so let's continue. Second में हमने अभी लास्ट में देखा कि कुछ एग्जांपल्स उन्होंने लिए, फिशरमैन और द मैन गैदरिंग सॉल्ट. इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. थर्ड स्टैंजा, that those who prepare green wars, those who are preparing for war, war with gas, war with fire, victory with no survivors. Those who prepare for war, उन लोगों के बारे में अब नेक्स्ट कम्युनिटी को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, पैब्लो नरूडा, कि उस कम्युनिटी को who are preparing for wars, जो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट वॉर विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, गैस, फायर एंड ऑल, बट व्हाट वुड बी द रिजल्ट? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. देयर वुड बी विक्ट्री, डेफिनेटली कोई ना कोई जीतेगा, बट देयर वुड बी नो सर्वाइवर्स एट ऑल. कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा. And would put on clean clothes, and for what? When we will keep still, when we will keep quiet, जब हम शांत होंगे, चुप होंगे, बिल्कुल still होंगे, frozen होंगे, तो क्या होगा? Would put on clean clothes and walk about with their brothers. हम brotherhood को spread करेंगे, brothers की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये it's all about brotherhoodness and togetherness. In the shade of doing nothing, और इसके लिए हमें करना क्या होगा? In the shade of doing nothing, कुछ नहीं करके ये सारा कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. और यहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने भी स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप ध्यान से सुनेंगे कि हम डिस्कस करेंगे दैट डिफरेंस बिटवीन पॉज एंड स्टॉप. द डिफरेंस बिटवीन पॉज एंड स्टॉप. किसी भी वीडियो को, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि किसी भी वीडियो को अगर आप प्ले करते हो, प्ले करने के बाद इफ यू आर हैविंग सम वर्क और यू वांट टू एनालाइज द प्रीवियस पोर्शन ऑफ दैट वेरी वीडियो व्हिच यू हैव सीन जस्ट नाउ, जो अभी अभी आपने वीडियो का पोर्शन देखा और देख करके हम आगे आ चुके हैं, उस चीज को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, सो वी विल पुट ऑन द पॉज बटन, वी विल क्लिक ऑन द पॉज बटन. हम पॉज बटन दबाएंगे, ना कि स्टॉप करेंगे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉज एंड स्टॉप? जब हम किसी चीज को पॉज करते हैं तो वो वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं, वहीं से वापस से हम शुरू कर सकते हैं. बट व्हेन वी विल स्टॉप इट, वी विल स्टॉप फ्रॉम द बिगिनिंग. हम फिर से वापस उसको शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई पैब्लो नरूडा इज रिक्वेस्टिंग दैट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज. जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. एंड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. So with total inactivity, when everything would inactive, so life is what it is about. Life के मायने पता चलेंगे कि लाइफ की सही मायने क्या है. We would be get to know. हम जान पाएंगे, we would be able to know कि what is the real meaning of life. Life किस लिए है, किस पर्पस के लिए. So I want no truck with death. और बार बार वो चीज कह रहे हैं कि I want no trucks with death. मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है. It's not about death. It's all about a pause. It's all about a total inactivity. All right. Let's move towards the fourth one, the fourth stanza. If we are not so single-minded, he is requesting that if we would not be so single-minded, अगर हम बहुत single-minded होकर के काम नहीं करते हैं, single-minded about what?
about keeping our lives moving, बस लाइफ को चलाए जाना, कि बस सुबह उठे और सुबह से उठ करके जो रूटीन हमने फॉलो किया उस रूटीन को बस चलते जाना और कंटिन्यू उसी साइकिल को बस रिपीट करना. We don't have time to think over it, but we don't have time to analyze our deeds. हम अपनी चीजों को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. So if we are not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence, might possible this huge silence, what he is requesting now, जिस बारे में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये साइलेंस, this huge silence might interrupt this sadness. इस सैडनेस को इंटरप्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करे. माइट पॉसिबल कि ये सैडनेस को इंटरप्ट करे. व्हाट सैडनेस? टू काइंड ऑफ सैडनेस वी आर हैविंग इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में दो तरह के सैडनेस हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट इट. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ. फर्स्ट थिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ. Never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Then second sadness is we every day threatening ourselves with death. We are not able enough to accept this, right? We every day threatening ourselves with death, and the important one is never understanding ourselves. These two sadness we are having in our life, and might possible this silence might interrupt this sadness. इस sadness को interrupt करने के लिए ये huge silence बहुत बड़ा cause, बहुत बड़ा factor बन सकता है. Might possibility is there. All right. Let's move towards the fifth and the last one and the concluding part of this poetry. Perhaps the earth can teach us, or might possible जब ये सब कुछ रुका होगा तो शायद अर्थ हमें ये सिखा सके. You can relate this poetry with present scenario of word. आज जो word के अंदर जो present scenario से भी आप relate कर सकते हो कि might perhaps the earth can teach us, कि जिस तरह से अर्थ खुद को heal कर रहा है in this corona period. All right. So you can relate this poetry with this corona period also. This pandemic also, कि जब सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ फ्रोजन कंडीशन में हो गया है, ये इट्स नॉट अबाउट डेथ, इट्स नॉट अबाउट परमानेंट स्टॉप, इट्स अबाउट अ पॉज. वी हैव टेकन अ पॉज. हमने अपनी डे टू डे लाइफ को पॉज किया हुआ है, एंड देन वापस से हम फिर से फंक्शन हो जाएंगे, फिर से वर्क में आ जाएंगे. लेकिन उस बीच क्या होगा कि perhaps the earth can teach us. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. जब सब कुछ dead जैसा लगेगा, dead जैसा होगा, not exactly the death. All right. When everything seems dead and later proves to be alive, then definitely it would be alive. It proves to be alive, and now I will count up to 12. वो अपनी बातें कह चुके हैं, अपनी बातें समझा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं. Now he is saying that now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. You keep quiet and I will go. Definitely I will go. Okay. Hope you like this video. Thanks for watching. Thank you very much. Stay tuned with us. Like, comment and share. Thank you.